Hello viewers, I am Deepti. Now I am making the concluding part of ICSE Class 10 Biology paper for the year 2026 board paper. Now question number 6 I am starting with now. Explain the term population density with reference to human beings. The number of human beings of a population in per unit area at a specific time. You have to write the definition. Keywords are much more important. Now, second is a 17-year-old girl was having irregular menstrual cycle. Her mother took her to their family physician. She was diagnosed with adrenal virilism. Study the picture given below and answer the following questions. So here, first is आपके पास से पहले तो सिर्फ ये पूछा है कि hyper secretion of which hormone results in adrenal virilism in human females. इन ह्यूमन फीमेल्स तो इसका आप दो तरह से आंसर दे सकते हैं. यू कैन गिव इन बोथ वेज. एड्रिनल कॉर्टेक्स सेक्रीट्स कॉर्टिजोन और यू कैन आल्सो राइट कॉर्टिकल हॉर्मोन्स. Second is mention one symptom of this disorder. So many symptoms are there. Develop certain male characters such as beard, mustaches, and deep male voice. You can write either of them. Or you can write this complete line. Differentiate between mitosis in plant cell and animal cell based on cytokinesis only. So if we are talking about plant cell, so in the case of a plant cell, you know cell plate हमने लिखना है इसके अंदर cell plate formation in plant cell, plate formation, and in animal cell we have to write कि cleavage furrows start deepening, and because it is carrying 2 marks we have to give 2 points. So in the second point we can write for plant cell we can write this is centrifugal because from center to outside ये change आ रहा है, and for animal cell this is centripetal because it is happening from outside to center. क्योंकि 2 marks का है तो 2 points you have to give there. Now next is Sarah placed a healthy potted plant in a dark room for 48 hours to perform an experiment on photosynthesis. She plucked one of the leaves and tested it for starch. The leaf did not turn blue-black on adding iodine solution. Why was the plant placed in the dark for 48 hours? To de-starch it, or you can say to remove the starch present in the leaf. What is the significance of boiling the leaf in alcohol during the starch test? So it is to remove chlorophyll. You have to write it properly, chlorophyll, because for after removing chlorophyll it is easy for us to carry on starch test or iodine test. You can write there. Now copy the diagram given below. This diagram is given here. So here diagram यही रफ आपको सिर्फ simple part दिया है. Spinal reflex section में you have seen this diagram in your book. Name the structure. So the structure is spinal cord. तो ये तो आपको पता चल ही रहा है. क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज शोन देयर एंड लेबल ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर. तो डार्क आप बीच वाला पोर्शन को दिस पोर्शन वेयर दिस बटरफ्लाई यू कैन सी दिस पोर्शन यू हैव टू मेक डार्क. दिस इज डार्क बटरफ्लाई पोर्शन जो आप करेंगे दिस इज ग्रे मैटर और उसका आउटर जो बाहर का पोर्शन है दिस इज लाइटर, मतलब वैसे तो व्हाइट है ही है तो व्हाइट मैटर हो गया. Now coming to question number 7. So कुछ और इसके अकॉर्डिंगली पूछा नहीं क्योंकि लोकेशन तो ऑलरेडी पहले ही पूछ चुके हैं. Question number 7. Write the overall chemical equation for photosynthesis. This is 6CO2 plus 12H2O. On the arrow we have to write in the presence of sunlight, or you have to again write chlorophyll. In the presence of these two only, it will form C6H12O6 plus 6 molecules of water and 6 molecules of O2 जो हमारे लिए जरूरी है. So this reaction is carry 1 mark. आपको बैलेंस भी देना है, एरो के ऊपर लिखना भी है. Expand the abbreviations NADP. Now in NADP full form is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. In ADP adenosine diphosphate. एब्रीविएशंस की मैंने आपको पहले भी पता है, आपको आते ही मैंने अलग से शॉर्ट भी बनाई हुई थी. थर्ड इज एक्सप्लेन द टर्म सिनेप्स. Synapse is the point of contact between the terminal branches of axon of
one neuron with the dendrites of another neuron separated by a fine gap. Definitions में keywords काफी important रहते हैं. Name the neurotransmitter that allows the transmission of impulses from the synapse. This is acetylcholine. Spelling ठीक होने चाहिए, ACETYLCHOLINE. Acetylcholine. Next is, what is the role of following? Leydig cell and seminiferous tubules. ये आपको confuse करने के लिए ही दिया गया है, because role means आपको function देना, और function तो same ही है, उसी का part है. Leydig cell is, you can write production and secretion of male hormone testosterone. And seminiferous tubules means it is the site of production of sperm. तो sperm आ गया, और you can also write spermatogenesis. ये आप लिख सकते हैं. उसमें आप मतलब पता तो है आपको मेल पार्ट ही है, लेकिन उसमें मेन आपको हार्मोन का नाम देना है और इसमें स्पर्म का नाम देना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लिए. Next is vanishing greenery, a growing urban crisis in most of our cities, rapid urbanization from the past 2 decades. इसे आपको पता ही है. So mention one significant problem caused by the reduction in urban greenery. So this is increase in air pollution, you can write. Loss of habitat and loss of biodiversity, or soil erosion can one of the major points also. How do green plants contribute to improving the air quality? By photosynthesis, they absorb carbon dioxide and give us oxygen. Means basically purify the environment, you can write, and they can also trap some harmful gases like sulfur dioxide, etc. What role can you as a citizen play in protecting urban greenery? So this is what we can do. We can plant more and more trees. We can organize plant drives, afforestation, spread awareness about the importance of trees. These points you can write, any of them. Next, last question is, write the term for the pressure exerted by the cell contents on the cell wall. This is Turgor pressure. Name the fluid present. This is Turgor pressure. Name the fluid present between the meninges and spinal cord. This is cerebrospinal fluid. What is its function? It acts as a shock absorber. You can also write it prevents or protects us from mechanical injuries. Now this is the diagram of a turgid plant cell. Copy the diagram and label vacuole and plasma membrane. So this hollow portion, this is vacuole. और आपको पता ही है इन प्लांट सेल सबसे आउटर मोस्ट जो टफ हार्ड कवरिंग होती है, दिस इज सेल वॉल. तो हमें सेल वॉल शो नहीं करनी. दे आस्क अस टू ड्रॉ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो सेल वॉल से अंदर जाएंगे. दिस इज अवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनसाइड मेम्ब्रेन. बिकॉज टर्जिड सेल दिखाया, तो इन द कंडीशन ऑफ टर्जिडिटी वो प्रेस हो जाते हैं टाइटली अगेंस्ट द सेल वॉल. बट हमें उसके अंदर वाली वॉल दिखानी है. बाहर वाली सेल वॉल है, अंदर वाली plasma membrane we have to show there. Now in the last question, last part of this question papers, select and write the 2 biodegradable waste from the given list. Styrofoam नहीं है, metal can नहीं हो सकते, decaying fruits, these are biodegradable, plastic bottles not, then newspaper. So these 2 are biodegradable. Last is Rajat Singh was working as a supervisor in a stone quarry where rock, sand and gravel are extracted by techniques like digging, drilling, blasting. Give the collecting term for the structure located in internal ear. मैं अभी तक ये सोच रही थी कि ear नहीं आया. The term used for inner ear is membranous labyrinth. Labyrinth भी लिखा है तो भी marks मिलेंगे. Name the sensory organ in the cochlea which was damaged for Rajat Singh. उसके लिए बोला है क्योंकि high decibel noise में अगर हम continuously काफी घंटे तक काम करते हैं, then organ of Kotai is the answer. Areas having sensory cells, जो कि हमारा spiral organ है, तो organ of Kotai you have to write here. What kind of pollution do the workers face in the stone quarry? So main is noise pollution because here it is given from loud noises of digging, drilling, blasting. So noise pollution is there, but above all air pollution is also there because of the high concentration of dust particle or small particulate matter. Air pollution was also there. तो ये आपका पेपर का एंड हुआ. आप कुछ क्वेश्चंस जो आप बोल रहे हैं, मैं ऑलरेडी जो लाइव में आपको आंसर्स दे चुकी हूँ, जैसे डायबिटीज वाला. बेटा डायबिटीज में इंसिपिडस नहीं हो सकता बिकॉज इट इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ओनली, नहीं हो सकता. और दूसरा आप मुझे कह रहे हैं जो सेकेंड वाला,
वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें लॉस इन वेट है ही नहीं है। डायबिटीज मेलिटस में भी इनिशियल स्टेज में वेट लूज नहीं होता, स्टार्टिंग में वेट सेम रहता है, तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंगली वो होना चाहिए। बाकी आई विल गिव ए डीप थॉट, अगर कुछ होगा तो मैं मैसेज में ही लिख दूंगी, डोंट वरी। एंड अबव ऑल, अब आपका नेक्स्ट हिस्ट्री का पेपर है। जिन स्टूडेंट्स के पास साइंस नहीं था उनको तो बहुत टाइम मिला हिस्ट्री सिविक्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए, बट यू आर नॉट गेटिंग। तो आपके लिए हिस्ट्री के प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस मैंने बहुत महीने पहले दे दिए थे, एंड आई होप कि कोई लास्ट पिछले 3 सालों से जो पेपर मैं दे रही हूँ प्रिडिक्टेड क्वेश्चन हिस्ट्री सिविक्स के लिए, वो हमेशा पेपर में आए हैं। 99 अबव 90% मैं कहूंगी कि वो क्वेश्चंस आए हैं। तो प्लीज गो थ्रू ऑल दोज क्वेश्चंस, प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस आप मुझे मांग रहे हैं, कमेंट में लिख रहे हैं, बट आई हैव ऑलरेडी गिवन प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस। हिस्ट्री के ही सबसे ज्यादा मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, मैं आपकी रिक्वेस्ट पे आज दोबारा रीलोड करने की कोशिश करूंगी, पर अगर नहीं हुई तो यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सिविक्स के लिए भी है, हिस्ट्री सिविक्स के लिए भी है, शॉर्ट भी है और प्रॉपर वीडियो भी है। मोरओवर एमसीक्यू के सारे चैप्टर्स हिस्ट्री के अलग अलग 60+ एमसीक्यूज आपके पास हैं मेरी तरफ से। उसके अलावा भी हिस्ट्री के बहुत सारे वीडियोस और भी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। क्वेश्चंस तो मांगते हो, देखते नहीं हो, शेयर नहीं करते हो, व्यूज नहीं देते हो, कहना भी नहीं मानते हो। जो क्वेश्चंस कहती हूँ पढ़ते नहीं हो, बाद में कहते हो कि मैम यू आर राइट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।